These are not sentences, these are sentences. Okay, let's understand which are sentences, which are not sentences. Okay, understanding? Okay. Has a dog, has a dog, has a dog, has a dog. Okay, has a dog, but who has a dog? Who has a dog? It has not mentioned here. Okay, who has a dog? So this is incomplete sentence. Okay, and at the end of the sentence you cannot see, we cannot see full stop. Okay, we cannot see the implementation of the full stop, punctuation mark. Okay, so this is incomplete sentence. Okay, it is not completed, it is incomplete sentence, and this is not the correct sentence. Okay, understanding? And let's see the another sentence which is corrected one. These are the correct sentence. Okay, let's see the corrected one. Okay, the opposite of the same sentence, how it is corrected, let's look at. Okay, Bob has a dog. Oh, means has a dog. Who has a dog? Bob has a dog. Means this sentence is very correct. Okay, it is very completed. Okay, subject also mentioned clearly. Bob. Who has dog? Who has a dog? Bob has a dog. Okay, and at the end of sentence you can see clearly full stop is implemented here. So it is a statement sentence. It is very completed sentence. Okay. Similarly, let's look at the second example. Wants to go to, wants to go to, wants to go to. Okay, who wants to go to? Where wants to go to? So nothing is implemented here. It is very incomplete sentences. By sounding you can easily hear. Okay, easily hear this is not the complete sentence. Who wants to go to? Who wants to go to? Where wants to go to? Nothing is implemented. Okay, this is incomplete sentences. And at the end of the sentence you cannot see, or you does not see the implementation of the punctuation mark. So this is very incorrect and incomplete sentence. Okay, let's see the corrected one of this very opposite. Okay, my brother wants to go to Paris. Okay, it means the completed sentence you can see. My brother, who is the subject? My brother is the subject. Brother, where wants to go to? He wants to go to Paris. Okay, object is also there and subject is also there. Okay, my brother wants to go to Paris. And at the end of the sentence, you can see the use of punctuation mark, full stop. Okay, it is very completed sentence. Okay, it is correct one. Third example we can see. Seema likes the. Seema likes the. What Seema likes? What Seema likes? Subject is here. We can see subject is here. Seema. Seema likes the. But what Seema likes? What Seema likes? That is not mentioned here. Okay, it is very incomplete sentence. Okay, this is incomplete sentence. And let's look at the corrected one. How it is corrected. Okay, Seema likes the magic show. Okay, now I can understand. Seema likes what? Seema likes the magic show. Now it is completed. It is a good sentence and it is corrected sentence. Okay, Seema likes the magic show. There are two parts in a sentence. In a sentence, there are two parts. Okay, there are two parts in a sentence. What are they? They are subject number one, number two, predicate. Okay, subject and predicate. Now we will discuss what is subject about. Okay, what is a subject? Okay, in a sentence. Okay, the subject tells whom or what the sentence is about. मतलब सब्जेक्ट क्या बताता है? सब्जेक्ट बताता है कि किसके विषय में सेंटेंस लिख रहे हैं. ओके, कौन और किसके विषय में सेंटेंस लिख रहा है वो बताता है सब्जेक्ट. ओके, हु एंड व्हाट. कौन और किसके विषय में सेंटेंस लिख रहा है वो बताता है. ठीक है, सब्जेक्ट वो बताता है. ठीक है, अब predicates. What is predicate in a sentence? Okay, the predicate shows the state of being or action of the subject in a sentence. Predicate shows the state of being or action in a sentence. मतलब predicate क्या बताता है?
वो कौन है, स्टेट ऑफ बीइंग, वो कौन है, वो टीचर है कि वो स्टूडेंट है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, ठीक है। वो कौन है और क्या एक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, वो बताता है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, वो सब्जेक्ट कौन है, वो सब्जेक्ट का क्या कार्य है, ठीक है, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो बताता है प्रेडिकेट। ओके, अंडरस्टैंडिंग। ओके, okay, now we will identify which is subject and which is object. Okay, we will recognize which one is subject and which one is object. Okay, understanding. So let's see the example. Okay, number one, the lion roars at the deer. The lion roars at the deer. Okay, which one is predicate, which one is subject? We have to identify, we have to recognize. Okay, first of all, which one is subject? The lions roar at the deer. Which one is subject? The subject is the lion. The lion. ठीक है, the lion क्या है, subject है। अब predicate कौन सा हुआ, lion क्या कर रहा है, okay, what action is doing right by lion, okay, lion roars at the deer, deer के ऊपर क्या कर रहा है, roar कर रहा है, ठीक है, roar, ठीक है, understanding. So this one is the predicate. Okay, this one is predicate, understand, this one is subject. The lion is subject, roars at the deer. This line is predicate. Okay, understanding. Okay, Rahul is behind Meena. तो राहुल कहाँ है, बिहाइंड, मीना के पीछे है, ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पे, which one is the subject? राहुल is the subject. Okay, is behind मीना, is behind मीना क्या हुआ, ये हुआ predicate. तो let's look another example. मोहित is a rising star. मोहित क्या है, rising star है। तो मोहित क्या हुआ, मोहित सब्जेक्ट हुआ। प्रेडिकेट क्या है, इज अ राइजिंग स्टार है। मोहित का स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, मतलब मोहित क्या है, राइजिंग स्टार है। स्टेट ऑफ बीइंग क्या है मोहित का, वो राइजिंग स्टार है। सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, ओके, सब्जेक्ट का प्रेडिकेट, मोहित सब्जेक्ट है, उसका प्रेडिकेट क्या है, राइजिंग स्टार है। वो स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, राइजिंग स्टार है। अंडरस्टैंडिंग। ओके, नंबर 4, Ramesh plays football. Ramesh plays football. So which one is the subject here? Yeah, you know which one is the subject here? Ramesh is a subject. Okay, इन्हें पता है फुटबॉल खेलता है, ठीक है। Ramesh plays football. Ramesh, okay. Number last, 5th number. The building at the end of the street was built by my dad. The building क्या है, बिल्डिंग का होल डेफिनेशन दिया है कि नहीं दिया है। एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट, बिल्डिंग कहाँ पे है, एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट। इट मीन्स द बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट इज सब्जेक्ट। व्हाई, बिकॉज बिल्डिंग कहाँ पे है वो भी मेंशन दिया है, ठीक है। और सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, सब्जेक्ट में नाउन इंक्लूडेड होगा, प्रोनाउन इंक्लूडेड होगा और नाउन फ्रेज इंक्लूड होगा, ठीक है। इसमें क्या है, फ्रेज भी है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, फ्रेज है कि नहीं है, ठीक है। नाउन भी है, फ्रेज भी है कि नहीं, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है। नाउन भी है, फ्रेज भी है, इसलिए नाउन और फ्रेज दोनों को क्या करना है, वो दोनों को सब्जेक्ट में डालना है, वही सब्जेक्ट है। द बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, दिस इज सब्जेक्ट। The building at the end of the street is subject. Was built by my dad. मतलब was built by my dad. क्या एक्शन हुआ था वहाँ पे, उसके पापा ने बनाया था, ठीक है।
वो बिल्डिंग क्या बनाया था, उसके पापा ने बनाया था। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, प्रेडिकेट्स में आता है, ठीक है। सो ये क्या हुआ, बिल्ड एट द, बिल्ड बाय माय डैड, ये क्या हुआ, प्रेडिकेट हुआ। ओके, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विच वन विल बी द सब्जेक्ट एंड विच वन विल बी द प्रेडिकेट। ओके, आई विल गिव द क्वेश्चंस, okay, I'll give the sentence, you have to identify, recognize which one is subject and which one is predicate. Okay, students of class 3, please turn the page number 8, English grammar, page number 8. As you can see here, and the question, circle the subject with red crayons and predicate with green crayon. Okay, circle the subject with red crayon and predicate with green crayon. Okay, the same I have written on the whiteboard here also, and I will discuss how to circle the subject and the predicate, okay, in a sentence. Okay, one by one I will do. Similarly, you have to circle in book only. You have to circle in book with which color? Subject with red crayon and predicate with green crayon. Understanding? Okay. Let's see the first example. Mr. Mohit is our principal. Okay. In this sentence, Mr. Mohit is our principal. Okay, in this sentence, what sentence is saying about Mr. Principal, Mr. Mohit is our principal. So here, which one is the subject? Which one is the subject? The subject is Mr. Mohit. Okay, please circle the subject with red crayon. Okay, do in a book only. Okay, you can do in a book only. Circle, but right now I'm doing on whiteboard, but you have to do in book. Okay, do in book. Mr. Mohit, so Mr. Mohit the subject, so I have circled with my marker. Okay, but you have to circle with red crayon. Okay, is our principal. Okay, what state of being is the subject? The Mr. Mohit, what state of being he has? Okay, what predicate he has? He is a principal. He is our principal. Sorry, he is our principal. So, is our principal is predicate. Okay, you have to circle with green crayon. Okay, predicate with green crayon. Okay, this is predicate. This is subject. Similarly, number 2, Rahul and Shyam are in the 3rd grade. Rahul and Shyam are in the 3rd grade. Means Rahul and Shyam क्या है? ये दोनों सब्जेक्ट है. ठीक है, दोनों के विषय में बोल रहे तो दोनों सब्जेक्ट हुआ. ठीक है, राहुल एंड श्याम बोथ आर सब्जेक्ट, आर इन द 3rd ग्रेड. कहाँ पे है? आर इन द 3rd ग्रेड. दे आर इन द 3rd ग्रेड. ओके, सब्जेक्ट में प्रेडिकेट में इज और आर से जो भी आगे प्रेडिकेट आता है वो प्रेडिकेट बन जाता है. अंडरस्टैंडिंग? आर इन द 3rd ग्रेड. आर इन द 3rd ग्रेड मीन्स आर से यू हैव टू सर्कल इन द 3rd ग्रेड. ये क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ. वैसे नंबर 3 का देखेंगे एग्जाम्पल. ओके, विल सी द नंबर 3 एग्जाम्पल. ओके, द वेटर ड्रॉप्ड द ट्रे ऑफ फूड. The waiter dropped the tray of food. Means, which is the subject? The waiter is a subject. Okay. Predicate कौन सा है? Dropped the tray of food. Dropped. क्या कार्य कर रहा है? क्या किया है waiter ने? He dropped the tray of food. Okay. He dropped the tray of food means it is predicate. Okay. The waiter is subject. Understanding? Now number 4, the dog in our neighbor's yard,
neighbor's yard bark all night. Okay, the dogs in our neighbor's yard barks all night. Okay, means क्या हुआ? The dog क्या है? Subject है. The dog subject means dog बस subject नहीं है. यहाँ पे क्या है? हमें noun phrase का भी ध्यान देना है. ठीक है, dog कहाँ पे है? Dog in our neighbor's yard. Neighbor के कहाँ है? सामने है. ठीक है, neighbor yard में है. ठीक है, neighbors के सामने, neighbor के जमीन में है. ओके, इन आवर neighbor's yard. ठीक है, bark all night मीन्स bark all night क्या है? bark all night predicate है. ठीक है, it is predicate. वैसे नंबर 5 देखेंगे. 5 में क्या है? Ali and I studied for our science test. ओके, Ali and I. Ali and I क्या हुआ? Subject हुआ. This is subject. ओके, studied for our science test. Studied for our science test. ये क्या हुआ? Predicate. विशेषता बता रहा है ना, जिसका सब्जेक्ट का किसका विशेषता बता रहा है? सब्जेक्ट का विशेषता बता रहा है. ठीक है, सब्जेक्ट का स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन इन अ सेंटेंस बता रहा है. ठीक है, विशेषता बता रहा है. प्रिडिकेट है वो क्या है? प्रिडिकेट है. तो स्टडीज फॉर आवर टेस्ट, साइंस टेस्ट क्या हुआ? ये हुआ प्रिडिकेट. ओके, प्रिडिकेट ऑलरेडी रिटन. नंबर 6, he called his parents after the magic show. He called his parents after the magic show means he is what? He subject हुआ. Called his parents after the magic show. Called his parents after the magic show. ये क्या हुआ? ये हुआ आपका predicate. ठीक है, he लड़का, कोई लड़का का विशेषता बता रहा है. क्या? Called his parents after his magic show. After the magic show. ठीक है, called his parents after the magic show. ये क्या हुआ? प्रिडिकेट हुआ. ओके, ऐसे ही आपको मैंने जैसे यहाँ पर सर्कल लगाया, आपको क्रियन से करना है. कौन सा क्रियन यूज करना है वहाँ पे लिखा गया है. पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 you can see down, see number, highlight the part of the sentence indicated in brackets. Okay, highlight the part of the sentence indicated in brackets. Okay, ये करेंगे. If you have highlighter then you can highlight. Otherwise if you don't, those who don't have highlighter, then you don't have to highlight. You just have to give underline. Okay, and differentiate the subject and predicate. Okay, first of all let's look at the first sentence. Okay, number 1, I went to the store and bought a new pair of shoes. ओके, यहाँ पे कौन सा प्रेडिकेट बोल रहा है? ब्रैकेट के अंदर क्या है? प्रेडिकेट है. आपको क्या करना, क्या हाईलाइट करना है. आपको प्रेडिकेट हाईलाइट करना है. ओके, मतलब प्रेडिकेट कौन सा है? आई तो सब्जेक्ट हो गया. प्रेडिकेट वेंट टू द स्टोर एंड ब्रॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज. अंडरस्टैंडिंग? समझ गए आप? समझ रहे हो? ओके, ये हुआ आपका प्रेडिकेट. ओके, जो ब्रैकेट में दिया है वहीं पे उसी को आपको हाईलाइट करना है. ठीक है, अगर हाईलाइटर नहीं है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं पेंसिल से अथवा स्केच पेन से. ओके, बुक में ही करना. ठीक है. नंबर 2, द न्यू एंटरटेनमेंट सेंटर लुक ग्रेट इन आवर रूम. द न्यू एंटरटेनमेंट सेंटर लुक्स ग्रेट इन आवर रूम. तो यहाँ पे क्या है? क्या हाईलाइट करना है आपको? प्रेडिकेट करना है. यहाँ भी प्रेडिकेट करना है. तो प्रेडिकेट कौन सा है? द न्यू एंटरटेनमेंट सेंटर. ये तो सब्जेक्ट हो गया. ओके, प्रेडिकेट क्या है? लुक्स ग्रेट इन आवर रूम. ओके, दिस इज प्रेडिकेट. नंबर 3 एग्जाम्पल. द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल सॉ मोर देन 50 पेशेंट टुडे. द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल सॉ more than 50 patient. Okay, today 50 patient today. Understanding?
50 पेशेंट, ये पेशेंट होने चाहिए, ठीक है, 50 पेशेंट हो गया, पेशेंट होने चाहिए। द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल सॉ मोर देन 50 पेशेंट्स टुडे। मतलब यहाँ पे क्या है, आपको हाईलाइट करना है, सब्जेक्ट हाईलाइट करना है। ओके, तो सब्जेक्ट कौन सा है? द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल सॉ मोर देन 50 पेशेंट टुडे। मतलब क्या है सब्जेक्ट? द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, एट द हॉस्पिटल। ओके, हु एंड व्हाट, हु एंड व्हाट यहाँ क्लियरली मेंशन दिया है कि नहीं दिया है? सब्जेक्ट में क्या होगा? हु एंड व्हाट। ओके, हु एंड व्हाट सब्जेक्ट में क्या होगा? हु एंड व्हाट सब्जेक्ट में नाउन होगा, प्रोनाउन होगा और नाउन फ्रेज होगा। अंडरस्टैंडिंग? ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। द डॉक्टर एट द हॉस्पिटल, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ऐसे ही आपको सी नंबर बुक में, पेज नंबर 9 बुक में, यहाँ पे क्या है? 3 नंबर कट चुके, 3 नंबर तक। 4 नंबर का, मैनी पीपल एट द इवेंट विश्ड दे हैड एन अम्ब्रेला। ओके, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है आपको आइडेंटिफाई खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ये होमवर्क हुआ, इसी किताब में ही करना, ठीक है। कौन सब्जेक्ट कौन सा है? मैनी पीपल एट द इवेंट हुआ ना? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? इज दिस करेक्ट और नॉट? यू हैव टू हाईलाइट इट। ओके, ओके, विच दे हैड एन अम्ब्रेला। मैनी पीपल एट द इवेंट दे विश दैट if they could have umbrella. Okay, similarly number 5 में क्या है? the middle of the cake was not done, the middle of the cake was not done। इसमें सब्जेक्ट आपको हाईलाइट करना है। कौन सा सब्जेक्ट है? the middle of the cake है कि was not done है? you have to identify, you have to highlight। okay, 6 number, the carpenter cut the piece of wood about 3 inches too short। मीन्स इसमें प्रेडिकेट कौन सा है? विशेषता, विषय का विशेषता क्या है वो आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। द कारपेंटर कट द पीस ऑफ वुड, ओके, द कारपेंटर कट द पीस ऑफ वुड अबाउट 3 inches too short। बहुत ईजी है। ओके, यू हैव टू डू, यू हैव टू हाईलाइट योर ओन। ओके, क्या होगा? प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट यही तो होगा, कट द पीस ऑफ वुड अबाउट 3 inches too short। सिमिलरली 7 का क्या है? समटाइम्स द एंटायर क्लास ईट लंच आउटसाइड द पिकनिक टेबल्स। मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है? 7 नंबर में सब्जेक्ट आपका कौन सा है? समटाइम्स द एंटायर क्लास, ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ईच लंच आउटसाइड ऑन द पिकनिक टेबल, कि पिकनिक टेबल्स, ये तो आपका प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट समटाइम्स द एंटायर क्लास। ओके, ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? यस, करेक्ट। आई राइट अबाउट स्कूल इन माई नोटबुक, इसमें प्रेडिकेट कौन सा है? आई क्या हुआ? सब्जेक्ट। राइट अबाउट स्कूल इन माई नोटबुक, प्रेडिकेट हुआ। राइट अबाउट स्कूल इन माई नोटबुक, ये क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। ये आपको करना है। ओके, ये आपको क्या करना है? होमवर्क, ठीक है, होमवर्क करना है, ठीक है। और नीचे दिखे डी नंबर कितना इजी है। डी नंबर ओके, डी नंबर नहीं करेंगे। ओके, लेट इट बी डी नंबर। ओके, अभी तक आपको इतना ही करना है। और जिसने भी किया है, जो भी करेगा वो फोटो क्लिक करके मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर देना, ठीक है। होमवर्क, अंडरस्टैंडिंग? ओके, मैं भी ये कॉपी आपको सैंपल के लिए क्लिक कर दूंगा, मगर आप लोगों को खुद करना है, क्या करना है, ठीक है। मैं खाली इंडिकेशन बस दे सकता हूँ। ओके, होमवर्क आपको करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? क्लास 3। ओके, थैंक यू।